Hello students, again I Anjum Nirvan welcomes you to join the class of English Literature. Today we are going to study lesson number 10 which named the Tree Huggers. Okay, basically it is a poem and this poem deals with tree conservation. Okay, or we can say that it talks about to avoid deforestation. Okay, the poet of the poem is Todd Michael. Who is the writer of the poem? Todd Michael. The poet basically talked here to protect environment. As we all know that we are aware that trees are very necessary to us. Okay, and what we do in when we need trees, हम क्या करते हैं? लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें trees की जरूरत होती है. What we do when we need it? We immediately cut trees for our benefits or our facilities. Okay, हम हमारे benefit और facilities के लिए क्या कर देते हैं? Trees को cut कर देते हैं. Okay, so the fact here is we are cutting trees for our needs. Somewhere we have forgotten the importance of trees. हम भूल चुके हैं trees की कितनी important tree कितना important है हमारी life के लिए. Okay, so through this poem the poet is conveying message to the children to protect the trees and to aware about the trees. Okay, so without further delay let's get started. Read this poem on saving trees and loving them. Now the poet is saying that read the given poem, and what is about it? It is about to save trees and love the trees. Okay, now here poet addressing the children. First of all, in very first stanza or very first line, the poet addressing the children. Children of the fragile forest, gather around where bird songs seem to be a loudest sound. Now poet is saying over here that children please gather, come together. Okay, एक साथ आइए and to protect fragile forest. Fragile here meaning is trees are easily damaged or broken. ऐसे trees जो easily damage हो सकते हैं और easily broken किए जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं. और obviously कोई भी अगर जाके काटेगा tree easily कट जाएगा. Okay, so यहाँ पे fragile forest किसके लिए है? Trees के लिए, which can easily damaged or broken. So the poet is saying that children please go together and protect the trees. Okay, protect the forest where bird song seem to be the loudest sound. जहां पर birds का क्या है? Loudest sound आता है. Birds क्या है? रहते हैं. Birds का एक area है, वो place of birds है. Okay, a place called summer, green as you could please. Now here poet has described summer. Why he is written over here summer? So it is the season where we understand the value of trees as they provide many things in summer. Okay, so the poet indicating here, addressing here summer, because in summer we can get many things from the trees. Even we can get shades from the trees. Okay, जब कई बार कोई थका हुआ होता है ट्री के नीचे जाकर बैठता है, शेड देता है. और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्री हमें प्रोवाइड करवाता है. सो इट a place called summer, green as you could please. Okay, a place where we all proudly hug the trees. Now it is the place where we go and we should hug the trees. Hug the trees यानी ट्री को गले लगाना चाहिए हमें, क्योंकि it provide us many things. Hug trees for the walnut and sweet apples. Walnut is a kind of akhrot, okay, and sweet apples for the shade above small country chapels. Now here, what is the meaning of chapel? First, I would like to tell you that small building or rooms that are used for Christian worship in a school, prison, large private house. Okay, we can say that large private house और ज़्यादातर Christians के लिए use होता है. Okay. सो यहाँ पर क्या बताया है? 3 थिंग्स यहाँ पर पोएट ने हमें बताई है. वॉलनट्स, स्वीट एप्पल्स एंड शेड. which tree provide us? Okay, because it provide us walnut, sweet apples, shade, so we should be grateful towards the trees. हमें grateful होना चाहिए tree के लिए कि ये हमें कितनी चीजें provide करवाता है. Here only poet giving example only of walnut, sweet apple, shade, but हमें बहुत सारी चीजें इनके अलावा भी tree से मिलती है. Now next is for giving squirrel and crow a place to live. Squirrel आप समझते हो, गिलहरी and crow कौवा. Okay, a place to live. हमें उनको place देना चाहिए because they live on the trees. Okay, for the priceless gift of oxygen they give. Now what trees give us? Oxygen, and because of them only we are living on the earth. Okay, हम उन्हीं की वजह से आज अर्थ पर सरवाइव कर पा रहे हैं because of trees. Okay, ट्री हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं. That's why we are surviving over here on the earth. Okay, so we should respect and we should be grateful towards trees.
Next, the poet is saying, follow your feet. Now, your is here addressing to the children. Okay, follow your feet across a woodland floor beneath the tall and ancient sycamore. Sycamore here is a kind of tree. Okay, so यहाँ पर poet ने क्या कहा है? Woodlands kind of forest जहाँ पर बहुत सारे trees होते हैं. That is woodland. Okay, so follow your feet. अपने feet को follow कीजिए, यानी आप आगे बढ़िए. Go forward. Go to the forest. Okay, beneath the tall and ancient sycamore. Now here it is a kind of sycamore, it's a kind of tree. तो उसे उन्होंने कहा है कि आप उनको जाकर देखिए, पहचानिए जो पुराने sycamore trees है. और भी बहुत सारे trees के बारे में बताया, like this under redwood it's a kind of tree. Okay, under tall blue pine it's a tree. Come with me and form an endless line here, describing here, the poet is saying that to the children that go together there and protect these kind of trees, sycamore, redwood and tall blue pine. Not only these are the example only here. So हमें तो हर तरीके के trees को protect करना चाहिए. Okay, join the boys whose name is simply me. Boys join कीजिए जिसका name me है. Now understand over here what is the meaning of me. Me means myself. Okay, now poet here is saying that you have to join yourself. एक बच्चा खुद ही को ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं हम दूसरों को फॉलो करेंगे, दूसरा क्या कर रहा है उसकी बात सुनेंगे, नहीं. ज्वाइन योरसेल्फ, चूज अ ट्री है ना, एंड हग इट. ओके, कि आपको क्या करना है, खुद ही के ऊपर डिपेंड होना है, खुद ही से जाना है, आगे बढ़ना है. आपको देखकर फिर दूसरा अपने आप आगे आ जाएगा. सो हियर मी इज योरसेल्फ, माई सेल्फ. ओके, take your turn and hug a mighty tree, and you go forward and hug a mighty tree. A wish we cast upon an August breeze. August breeze यानी अगस्त का टाइम होता है जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है. ओके, और ये ब्रीज की विंड्स के बारे में बात हुई है. A dream to cross the seven sacred seas. Seven sacred यानी हम हिंदी में बोलते हैं 7 समुंदर पार. ओके, एक ड्रीम होता है, एक विश होती है, उन सबको साइड में रखिए. एंड व्हाट यू हैव टू डू, रिलीज इट नाउ जस्ट लाइक अ बिग बैलून. अब आपको क्या करना है, अपने ट्री को जाकर हग करना है. सिर्फ ट्री के प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचकर देखिए. द पोएट इज सेइंग ओवर हियर. ओके, स्टॉप योर ड्रीम्स. ओके, अपने ड्रीम्स को एक बार थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और थोड़ा सा ट्रीज के बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारे लाइफ में. ओके, अ प्रेयर टू रीच द माउंटेन्स ऑफ द मून, टू सिटीजन्स ऑफ अर्थ, alas we say, go find yourself a tree to hug today. Now what the poet is saying there, we should try to protect trees. हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमें करना भी चाहिए. वी शुड डू दिस. हमें प्रेयर करनी चाहिए उनके लिए कि हम ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर हमें खुद से आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए. एंड इफ ग्रोन अप सेज, ग्रोन अप मीन्स एल्डर, सम ऑफ योर एल्डर इज सेइंग दैट डोंट बी अ फूल. क्या आप हक ट्री को हक कर रहे हो? डोंट बी अ फूल. इस तरीके से फूलिश वर्क मत कीजिए. और इज दैट व्हाट दे आर टीचिंग यू इन स्कूल, या फिर आपको कई बार स्कूल में भी किसी ने बता दिया है कि नहीं, हमें ट्रीज को हग नहीं करना है, ये क्या फुलिशनेस है. So just find this poem and read this simple rhyme. So then what you have to do, you just go and find this poem written by the Todd Michael. Okay, and read the simple rhymes. You will read the rhymes and you will get that what is the main role of the trees. Okay, don't listen anyone about the trees, and just go and hug the trees, that the poet is saying to the children. It's a cool to hug a tree from time to time. It's a cool means it is an interesting thing to hug a tree. Means hug here meaning is protect the tree time to time. Okay, children, this is how the world can be, making earth plan A and not plan B. Now children, the poet is describing here कि children, please do the thing. This is better thing what I am telling you. Okay, there is only plan 1, there is no plan B. कोई plan B नहीं है trees को protect करने का. Go and hug the ट्रीज. ओके, आप ट्री को हक कीजिए. कोई हक का मतलब क्या हो गया, आपने ट्री को पकड़ लिया, यानी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसे और किसी और को काटने से रोक रहे हो. ओके, डैमेज होने से रोक रहे हो. सो द पोएट इज सेइंग दैट चिल्ड्रन, दिस इज हाउ द वर्ल्ड कैन बी. हम जैसा सोचते हैं हमारा वर्ल्ड बहुत अच्छा हो सकता है. मेकिंग अर्थ प्लान ए. प्लान ए मीन्स जो मैंने प्लान बताया है उसको फॉलो करो. देयर इज नो प्लान बी. Okay, now here the poet is describing us and ending the poem
by these exclamation forms. So here is where change, share change means अपने आप में change लाओ, share करो, sing change, bring change. Okay, and start by hugging a tree. And how you will start? By hugging a tree. This is the first step. You, when you will start, then other will follow you. So in the last line, the poet explained in exclamation form. And so here we have completed our poem. And the poet basically provide us that the हमें ट्रीज को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उनकी उन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए. ओके, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, दे प्रोवाइड अस लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर सर्वाइविंग ऑन द earth. So this is how the poem ends. I hope you all have understood and motivated yourself to save a tree at least. Okay, यानी एक ट्री तो आप अपने से या तो ग्रो कीजिए या फिर उसे बचाइए. Okay, so in our next class we'll be continuing with question answers along with word meanings. Till then, bye bye, take care.